Hello, my dear students. Welcome back to your English grammar class. I hope you all are doing good and excited to learn. I'm back again with another new topic, and the topic is 12 Direct and Indirect Speech, chapter number 12. Before starting the topic, I hope that you have revised your previous chapter. Now, let's start the class. Chapter 12 Direct and Indirect Speech. To narrate the speech of another speaker in our conversation is an important part of our daily life. When we tell someone's speech to another, then we do some changes in the speech. We can do these changes in the speech of another speaker in the following two ways. My dear students, आमतौर पे जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन अगर हम किसी से बात करते करते हम किसी से ये बोलते हैं कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, तो हम उनका एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं बोलते, हम उसमें परिवर्तन करके अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द एक्चुअल वर्ड यूज्ड बाय द स्पीकर आर कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जो एक्चुअल वर्ड जो स्पीकर ने बोला है, जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूं. तो ये कैसी स्पीच हो जाएगी? डायरेक्ट, कि हमने उसकी बात हूबहू वैसी रख दी. लेकिन अगर हमने उसकी बात हूबहू ऐसी नहीं रखी, उसने मुझसे कहा कि वह एक राइटर है, तो ये कैसी हो जाती है? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है, जिसमें हम अपनी तरफ से चीजें ऐड कर देते हैं. ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ राइटर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच में यही है कि डायरेक्ट स्पीच आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप सेपरेट कर देते हैं, कॉमा को हटा देते हैं. वी यूज सर्टेन वर्ड, समटाइम वी यूज दैट, समटाइम वी यूज टोल्ड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम कैसे क्या ऐड करते हैं, क्या रिमूव करते हैं, और कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच को फॉर्म करते हैं. What we have to keep in our mind? In direct speech, the sentence is divided into two parts. Of out the inverted comma is called reporting verb. ठीक है, जो inverted comma के बाहर sentence होता है उसे हम reporting verb कहते हैं, और जो inverted comma के अंदर होता है उसे हम reported speech कहते हैं. The indirect speech, the substance or meaning of the various speakers are conveyed after making relevant changes. No inverted comma are used. ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट बात किसी को बताते हैं तो हम कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हम नहीं करते हैं. रूल फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ स्पीच, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हमें पता है. असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, exclamatory and optative sentences. Assertive sentences जो normal declarative sentence होते हैं, whether it is positive, affirmative or negative. Interrogative में हमें पता है कि हम questions पूछते हैं. Imperative sentence में हम order देते हैं या request करते हैं. Exclamation में हम sudden feeling को express करते हैं, और optative में हम किसी को curse या boon करते हैं. Now we are going to study how we are going to change direct into indirect in assertive sentences. Now let's start. Rule A. In assertive sentences, the reporting verb said is changed into told. अगर reporting verb said है तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो told में चेंज होता आता है. बट अगर told है तो वो वैसा ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ ही वो फॉलोड होगा. In assertive sentence, that is used as a link between the reporting verb and reporting speech. मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, जब हम नीचे सेमी कॉलन हटाते हैं, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम प्रोवाइड करते हैं दैट जो लिंक क्रिएट करता है रिपोर्टिंग स्पीच की और रिपोर्टिंग वर्ब की. रूल सी क्या है? इन द रिपोर्टिंग वर्ब is in the present form or future tense, there will be no change in the tense of the reported speech. Now rule D क्या है? If the reporting verb is in the past tense, अगर कोई past tense में है, the tense of verb in reported speech must be changed definitely. अगर कोई tense future में है, जैसे कि कोई बात अगर किसी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्यूचर में बोली है या प्रेजेंट में बोली है, तो हम वैसी की वैसी उसको बोलते हैं. लेकिन अगर वो पास्ट की है तो हम उसमें चेंजेस करते हैं. जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंग है वो पास्ट इंडेफिनिट में sang हो जाता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज सिंगिंग, वो पास्ट इंडेफिनिट में was singing. Has sung, had sung, has been singing, had been singing, sang and had sung. Now what we have to keep in our mind? The future tense of the reported speech is to be changed in a comparatively simple way. Will is changed into would and shall is changed into should or would, as the case may be. Whatever the case, will जो है वो would में change हो जाता है और shall जो है वो should में change हो जाता है. कुछ rules exceptions के हैं, हम देखते हैं क्या है. If the reported speech relates to some universal or habitual fact, जैसा कि मान लीजिए मैंने कहा कि सूरज जो है वो गोल है,
तो अगर आप उसको अपनी बात में बोलोगे तो आप यही बोलोगे कि मैम ने कहा है कि सूरज गोल है, या हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सूरज गोल होगा, सूरज गोल था, नहीं। जो नेचुरल चीजें होती है, जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, हमें उन बातों को वैसे के वैसे ही रखना पड़ता है, चाहे वो किसी भी टेंस में हम कर रहे हैं, कोई भी चीज हम कन्वर्ट कर रहे हो। यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज। Sometimes the past indefinite or past continuous tense of the reported speech remain unchanged when the speaker narrates an historical event. Same as historical events में भी sentence जो है वो unchanged ही रहेगा. Rule E, change of pronouns. अब pronouns का change हो जाता है, person का change हो जाता है, कैसे? Pronoun in the reported speech are changed according to the pronoun with the reporting verb. ठीक है, जैसे pronoun reported speech में होते हैं उन्हीं के according हम reporting verb में pronoun का change करते हैं. फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकंड पर्सन इज चेंज इनटू द पर्सन डिनोटेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. नाउ थर्ड पर्सन इज रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज इवन इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ narration. Rule F क्या है बच्चों? In the reported speech, when the present tense is changed into the past, an adjective, verb or adverb expressing nearness and similarly changed into one expressing distance, thus now becomes then, thus becomes so, this, that, today, that day, here, there, yesterday, that day before, tomorrow, the next day or the previous day. So इस तरह से हम certain changes करते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. यू हैव टू रीड द एग्जाम्पल्स अलोंग विथ मी. डायरेक्ट, he says I need money. He says that he needs money. The teacher said the earth revolves round the sun. The teacher said that the earth revolves round the sun. My teacher said India became free on 15 August 1947. My teacher said that India became free on 15 August 1947. It's your question time. Change the following into indirect speech. My dear students, you have to solve these exercises by your own by following the above rules. Now, how we are going to change interrogative sentence? Rules क्या है interrogative sentence के? Rules for a change of tense into interrogative sentence are the same as the assertive sentence. जैसे कि assertive sentence में है वैसे ही negative sentence में change होगा. Rules for change of a pronoun person in interrogative sentence same जैसे assertive sentence में हमने change किया, इसमें भी वैसे ही चेंज होगा. लेकिन इफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, who, what, which, whom, when, where, how and why, etc., these words serve as a link between the reporting verb and the reported speech. For example, he said to me, what is your name? अब ये क्वेश्चन आ गया, इंटरोगेटिव आ गया, तो what we are going to repeat? He asked me what my name was. What we are going to add? We are going to add ask instead of said in interrogative sentence. So what we have to keep in our mind? The interrogative sentence beginning with some form of the verb to be, whether or if is used as link word. Whether is a more accurate word used since it implies if or not. But if being shorter, it more commonly used. The reporting verb may be changed into asked, inquire, wanted to know, etc. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कभी कभी ask में भी चेंज हो सकता है, inquire, wanted to know, etc. में भी चेंज होता है. कुछ इंपॉर्टेंट नोट है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है जो इंटरोगेटिव में है और हम उसे चेंज कर रहे हैं, तो वो इंटरोगेशन का मार्क्स जो है वो हट जाता है. उसकी जगह कौन सा मार्क्स आ जाता है, कौन सा मार्क्स लगाते हैं हम? फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का हम चिन्ह उसके साथ लगा देते हैं. एग्जाम्पल, डायरेक्ट, he said to his friend, what can I do for you? Then what we are going to add? We are going to add asked. He asked his friend what he could do for him. Rest example, you have to read it by your own. Now, here some questions are given. You have to solve these questions by your own following the given above rules. Now, we are going to read imperative sentence. Imperative sentence कैसे sentence होता है? जिसमें हम किसी से निवेदन करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को सलाह या सुझाव देते हैं. Rule A, the reporting verb must be changed into some verb signifying a command, request or advice in keeping with some sense of the context. These verbs can be tell, order, request, command, advice, ask, etc. Rule B क्या है? Imperative mood of the verb is the reported speech and change into infinitive mood by placing to before it. ठीक है, हमें imperative sentence में हमेशा to का प्रयोग करना चाहिए. Rule C क्या है? Whenever a subordinate clause is attached to the imperative sentence, the tense of the verb is the subordinate clause is changed according to rules. Now we are going to read some examples. I said to my servant,
fetch my umbrella. I ordered my servant to fetch my umbrella. You said to him, please lend me your book. You requested him to please lend me your book. ठीक है, जब हम ऑर्डर देंगे तो हम ऑर्डर लिखेंगे, हम रिक्वेस्ट देंगे तो रिक्वेस्ट देंगे, और जब हम एडवाइस करेंगे, what we are going to mention? We are going to mention advice. Now, it's question time. You have to solve these questions by your own self following the above given rules. Now we are here to study the exclamatory sentences. Exclamatory sentences are the sentences which came sudden of some feeling or some emotions. Rule A, the reporting verb must be changed into exclaim. एक्सक्लामेटरी में हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम लगा देते हैं, और कुछ एक्सक्लेमेशन जो है इंटरजेक्शन है, जैसे फ्रेजेस है अल्लाह, हुर्रा, ब्रावो, डैम इट, ओ एक्सेट्रा शुड बी ड्रॉप. इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, इसको हम ऐड नहीं करते हैं, जो इंटरजेक्शनल वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं. ठीक है. कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू लिंक, दैट का हम यूज करते हैं लिंक बिटवीन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड वर्ब. एग्जांपल पढ़ते हैं. They said, "Hurrah! We have won the match." They exclaimed with joy that they had won the match. The old man asked, "Alas, I have lost my son." The old man exclaimed with sorrow that he had lost his son. Next example, you have to read it by your own self. Now, my dear student, it's question time. Change the following into indirect speech. Question is given to you and you have to change in indirect speech. He said, "How terrible the night is." He exclaimed with horror that the night was terrible. Rest you have to solve it by your own by following the above rules. Now we are at fifth, optative sentence. Optative sentence are the sentence in which we bless someone, we praise someone, we wish or we curse someone. ठीक है? In order to change optative sentence into direct form of speech, verb is changed into some such verb as wished. हम इस पे कैसे लगा देते हैं? wish लगा देते हैं या prayed लगा देते हैं. ठीक है. The old lady said to her son, "May you live a long and prosper." तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? The old lady prayed that her son might live long and prosper. Now, question time. My dear students, you all are requested to take out your pencil and we are going to solve few sentences from this exercise. As it is mentioned कि हमें इसे indirect में change करना है. He said to me, may you win a scholarship. He, what we have read now, अभी हमने क्या पढ़ा, कैसे sentence में हम prayed या wish जैसे word का इस्तेमाल करते हैं. तो he wished me or he prayed me that may I win a scholarship. All said together, may God grant peace to the departed soul. All prayed together that God grant peace to the departed soul. Rest you have to solve it by your own self. That's all from my side today. I hope you must have understood the concept of direct or indirect speech. I'll be seeing you in some another English grammar class with another new topic. Till then, keep learning, keep exploring, and take care of yourself. Bye-bye.